Hello students, welcome to the biology class. Today we will discuss the third unit of 12th class, which is human reproduction. Under this unit we will discuss the female and male reproductive systems. Then we will discuss the anatomy of testes and ovaries. After that we will discuss what is spermatogenesis and oogenesis. We will discuss about the menstrual cycle, fertilization, development of the embryo, and many other terms. So first of all, we will discuss about the primary sex organs and secondary sex organs. So primary sex organs, these are the organs which produce the gametes. So in males, the gametes are sperms, whereas in females the gametes are eggs or ovum. Sperms are produced by the organ which is testis, whereas the eggs or ovums are produced by the organs called ovaries. So basically we can say the primary sex organ in male is testis, whereas the primary sex organ in females is ovaries. Okay, the next term is secondary sex organs. So these are the organs, ducts or glands which assist the primary sex organs in conduction and fusion of gametes and development of the fusion product, that is embryo. They are different in male and females. The two types of individuals also possess some distinguished features called the secondary or accessory sex characters, like facial hairs, low pitched voice in males, and the formation of breast in females, and high pitched voice in the females. So these are the associated characters, or we can say the accessory sex characters. The next general term is male secondary sex characters and female secondary sex characters. So basically we can say what are the difference between male and female characters. So discuss one by one. So here I can write male, here is the female. The first thing is facial hairs. Facial hair. In male, the facial hairs are present, whereas in females, the facial hairs, that is beard and mustaches, which are absent in female. Second are the shoulders. What are the structure of shoulders? In males, the shoulders are broad, and in females, the shoulders are narrow. Next is breast. In male, the breasts are undeveloped, whereas in female, the breasts are well developed. The next character is the pelvis. The hip, we can say in the layman language, hip. The pelvis in male is narrow, whereas in female the pelvis is broader. Then other character is voice, the quality of voice. In males, the voice is low pitched, the heavy voice, the bass content in the voice of male is higher as compared to female. The voice of female is high pitched, the frequency of the voice of the female is very high as compared to males. So we can say the voice of male is low pitched and voice of female is high pitched. So these are few characters of males and female which distinguish them. So these are the secondary sex characters. So next, which is very important thing, is puberty. The term is puberty. So what is puberty? Puberty is the period between childhood
and adulthood, when primary sex organs become functional and start secreting sex hormones. Sex hormone is testosterone in males and estrogen in females. So these are the stages puberty. These are secreted at the stage of puberty. Puberty क्या है? तो एक period है between the childhood and adulthood when the primary sex organs of the male and female both start functioning. Next is term is adulthood, which is very simple term. Adulthood. So adulthood is reached when secondary sex organs are fully formed and become functional. So these are very general terms. Okay. The next thing is, which is very important from the examination point of view, which is reproductive system in males. So in males, it is a system of primary sex organs, accessory ducts and glands, and external genitalia, which is specialized in production, storage and nourishment of the sperms. The male reproductive system is mainly present in the pelvic region. It consists of pair of testes, then accessory ducts. Maybe there vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, then ejaculatory ducts, seminal vesicles, and many others. So we will discuss one by one. First of all, we will discuss about the testes. So here you can see the picture of a male reproductive system. So first of all, you can understand the location of the all these organs. So first of all, this is the testis, which is present between the legs outside of the abdomen. Testes are a pair of primary sex organs of male, which are specialized to produce sperms and secrete hormones, which is testosterone, or in general we can say androgen. They just lie outside the abdomen in the pouch-like structure, which is, we can show here, I can show with the red color. This is pouch-like structure called scrotum. In scrotum there is present, this is testis. Okay, testis. Secondly, there is male genitalia, which is known as penis. It consists of, you can see this duct, or this is a small tube like structure which comes from urinary bladder, and it comes through the male genitalia, which is called penis, and this tube is called urethra. So male genitalia works for two things. It helps in the discharge of urine which comes from urinary bladder, and also it helps in the discharge of dissemination of sperms. So both urine and sperms are passed through the human genitalia, which is penis. Then these are this is the urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, इसका फंक्शन बाद में पढ़ेंगे. देन इज द फ्रॉम टेस्टिस देयर इज अ डक्ट, this duct, which is known as vas deferens or vasa differentia. It is the main organs of the male reproductive system. So just I can try to explain the location of these organs. After that I will upload a three-dimensional model of the reproductive system, so you can better understand from this. So basically you have to just understand the name of organs and the location of the organs in the male body. So these are organs: scrotum, which is a pouch, testis, which is present in scrotum, then penis, which is the male sex organ, then urinary bladder,
then prostate gland, seminal vesicles. All these comprise and make a form male reproductive system. Okay, then we will discuss about the anatomy of testis, which is very important. So testes are soft oval structures which in adults reach length of 4 to 5 centimeter and width of 2 to 3 centimeter. Each testis communicates with the abdomen by a spermatic cord, okay, through inlingual canals between scrotum and abdomen. Testis had dense covering which is made up of tunica vaginalis. The second is tunica albuginea, and there is another covering which is known as tunica vasculosa. So basically three coverings हैं, tunica vaginalis, tunica albuginea, then tunica vesiculosa. Then the tunica albuginea and tunica vasculosa also pass into interior of the testis and divide the testis into so many number of compartments, about 250 compartments, called testicular lobules. So you can see this is tunica albuginea and tunica vasculosa, and they are grow inside. तो ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, दोनों की दोनों लेयर, और उसके बाद टेस्टिस को बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स रफ नंबर है, तो उसमें ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो अलग अलग लोब्यूल्स बने हैं, जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर lobules. So each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. So इसको zoom करते हैं और you can see these are the coiled tubes. So these are known as seminiferous tubules, and these tubules are embedded in the connective tissue. Okay, seminiferous tubules open into a network of fine channels called retitestis. So these are all seminiferous tubules. You can see all these are seminiferous tubules. Then from these tubules they are moved into here, and all these compartments, these tubules, seminiferous tubules, open into a new body, a network of further tubules which is known as retitestis. तो इस पूरी बॉडी को क्या बोल रहे हैं? retitestis. Okay. So the next is the connective tissue of the lobules contains small blood vessels, interstitial cells, and immunologically competent cells. Interstitial cells are large polyhedral cells, and they are also known as Leydig cells. क्या बोलते हैं उनको? Leydig cells. So इनका पर्पस क्या है? तो देखिए, सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन that is testosterone under the influence of some other hormones which are produced by the pituitary gland. The immunologically competent cells are lymphocytes and macrophages and the mast cells.
They provide protection against infections and various antigens. Androgen produced by the Leydig cells maintain male characteristics. तो जितने भी मेल करेक्टर्स हमने पहले पढ़े हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, वो क्यों डेवलप होते हैं? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन के कारण ही फेशियल हेयर्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, पेल्विस नैरो होता है, फैट डेपोजिशन कम होती है, मसल मास ज़्यादा होता है. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ testosterone in the body, the voice of male is low pitched because in males the Adam's apple is highly developed, whereas in female the Adam's apple is absent. So these all secondary sex characters are due to the presence of testosterone, and testosterone is produced by the Leydig cells. Okay. The epithelial lining seminiferous tubules of the seminiferous tubules is also called the germinal epithelium. Germinal epithelium. It has two type of cells, male germ cells. Further इसमें division है male germ cells. किसकी बात कर रहे हैं हम? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दीज ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर की जो लाइनिंग है विच इज़ जर्मिनल एपिथेलियम, उसमें फर्दर दो टाइप के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स हैं एंड सर्टोलाई सेल्स. सर्टोलाई सेल्स. तो मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस स्पर्म्स. In general we can say they produce sperms or spermatozoa. Sertoli cells, which are also known as nurse cells, क्या बोलते हैं उनको? Nurse cells. The Sertoli cells are the large pyramidal cells and their function is to nourish the germ cells, as well as they provide attachment and stimulus to the spermatids to form spermatozoa. So basically ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किनको? जो जर्म सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं. ठीक है. तो दिस इज़ द अनाटमी ऑफ टेस्टिस. तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी. तो रेटे टेस्टिस के आगे क्या होता है, उसमें से ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकल रही हैं इस तरफ से. तो ये क्या है? एफरेंट डक्ट्स होती हैं, या इनको बोलते हैं वैसा एफ्रेंशिया. दीज डक्ट्स ओपन इन दिस बॉडी, बीन लाइक बॉडी, विच इज़ नोन एज एपिडिडाइमस. क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमस. तो एपिडिडाइमस के जो तीन पार्ट हैं, दिस इज़ द हेड ऑफ एपिडिडाइमस, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस एंड दिस वन इज़ द टेल ऑफ एपिडिडाइमस. तो जो रेटेटेस्टिस से जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? वैसा एफ्रेंशिया. वैसा एफ्रेंशिया ओपन होती हैं एपिडिडाइमस में. एपिडिडाइमस से ये डक्ट निकलती है, आप देख रहे हैं ये डक्ट जा रही है इस तरफ, ये जाएगी जो है सेमिनल वेसिकल्स की तरफ. तो इसको हम बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया. ठीक है, या डक्टस डेफरेंस या वैसा डिफरेंशिया. रेटेटेस्टिस से जो आ रही हैं वो क्या है? एफरेंट डक्ट्स हैं, या उनको बोलते हैं वैसा एफ्रेंशिया. देन वो ओपन होती हैं एपिडिडाइमस में. एपिडिडाइमस से जो डक्ट आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेमिनल वेसिकल्स की तरफ जाती है, उस ट्यूब्यूल को बोलते हैं वैसा डिफरेंशिया. ओके. सो नेक्स्ट इज़, इसके अलावा हमने इसके साथ करना है, यहाँ पे देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन होगा. दिस इज़ द टेस्टिस. उसके बाहर है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस से यहाँ से निकली ये वैसा डिफरेंशिया. ये डिफरेंशिया मूव करी यहाँ पे किसकी तरफ?
तरफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के साथ नीचे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ नीचे आ जाता है, यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है जिसको हम इंटीरियर व्यू बोलते हैं। जो पहली डायग्राम थी वो थी लेटरल व्यू, ठीक है, साइड से। तो आप दोनों डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, एक भी करोगे तो चल जाएगा, अगर दोनों करोगे तो अच्छी बात है। तो इसमें से कोई भी एक आप डायग्राम अच्छे से याद कर लेनी है। तो नोट्स में आपने दोनों की ही ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, इंटीरियर व्यू और लेटरल व्यू। ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कस द एसेसरी डक्ट्स। तो इसके साथ जो एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सो इसमें हम लेंगे द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू अ नेटवर्क ऑफ चैनल कॉल्ड रेटिटेस्टिस एज वी डिस्कस्ड। द सेम लीड टू 10 to 20 fine tubules called vasa efferentia. Then vasa efferentia open into एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से क्या निकलेगा, देन वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया मूव करेगी, वो कहाँ पे ओपन होगी, सेमिनल वेसिकल्स में, और सेमिनल वेसिकल्स फिर कहाँ ओपन होंगे, यूरेथ्रा में। ओके, तो एक और चीज़ है कि जो वासा डिफरेंशिया है, या जिसको हम डेफरेंस डक्ट बोलते हैं, तो इसका काम क्या है, ये पास करती है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, जर्म सेल्स हैं उसमें, तो वो प्रोड्यूस करेगी स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद जाएंगे रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से जाएंगे वास एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से वो कहाँ जाएंगे, थ्रू वासा एफ्रेंशिया, एंड देन फाइनली दे विल pass through the urethra. Okay, so this is the whole process. So the next organ is the penis, the male sex organ, which is penis. This this organ is known as penis, which is male sex organ. तो इसमें भी जो आगे इसके पार्ट्स हैं, द फ्रंट, द कॉनिकल पार्ट इज़ नोन एज ग्लैंस पेनिस, विच इज़ कवर्ड बाय अ स्किन विच इज़ कॉल्ड द फोर स्किन. नेक्स्ट इज़ द shaft. This part it's called shaft, the middle body of the penis, which consists of we can say the spongy tissue. So penis is the male external genitalia that is erectile and function as male copulatory organ, which help during the process of copulation. Penis occurs in front of scrotum. It consists of long shaft which end is a sensitive tip, conical tip, which is known as glans penis. So glans is covered by a skin, we can say the foreskin, and which is technical, the name of technical term of this foreskin is prepuce. तो स्किन को क्या बोलते हैं, prepuce. So it is the basic structure of penis. So the anatomy of the penis is, so you can see here the diagram, which is this is the dorsal side and this is the ventral side, and this is a transverse section of the penis. So penis has 3 columns of spongy tissue, 2 dorsal and 1 is ventral. 2 dorsal, these are 2 dorsal, and this one is the वेंट्रल कंपार्टमेंट. सो जो डॉर्सल कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, या इसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, और जो वेंट्रल है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, तो इसमें 3 कंपार्टमेंट हैं, 2 डॉर्सल हैं जो बड़े वाले हैं, दीज वन, एंड
One is the smallest spongy tissue, which forms the third compartment, which is present on the ventral side. So dorsal को बोलते हैं corpus cavernosum, and जो ventral है उसको बोलते हैं corpus spongiosum. Okay. And these three spongy tissue columns become filled up with blood during the erection of the penis. And the other things you have to learn, which is superficial dorsal vein जो blood supply करती है, then dorsal penile artery, these two, okay, then dorsal penile nerve. तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें, कौन कौन सी, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, डॉर्सल पेनाइल आर्टरी एंड डॉर्सल पेनाइल नर्व. ठीक है, बाकी की चीज़ें बेशक आप इसमें छोड़ सकते हैं. देन आपने इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो वेंट्रल साइड पे की तरफ जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसमें से जो पास होती है यूरेथ्रा. ठीक है, उस स्पॉन्जी टिश्यू के बिल्कुल सेंटर में क्या है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है, और उसमें भी आपने ये यूरेथ्रल आर्टरीज को शो करना है, दिस वन. ओके, दिस इज़ द anatomy of penis. After that we will discuss about the seminal vesicles and prostate. So okay, so first of all we will discuss about the seminal vesicles. ये जो है यहाँ पे ये seminal vesicles हैं. रेड कलर में जो मैं शो कर रहा हूँ ये क्या है, प्रोस्टेट. ओके, चलिए. So seminal vesicles are pair of glandular sacs, okay, which occur between urinary bladder and the rectum. Rectum is the last part of large intestine. They produce a secretion which is a clear secretion, which is known as seminal plasma. It also contains the fructose, then fibrogen and many other things. Okay, so this is seminal vesicle. Seminal vesicle present कहाँ पे है? It is present between the urinary bladder and the rectum. The next is the prostate gland. It is a large pyramidal gland and that surrounds the beginning of the urinogenital tract. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this is the bladder, which is shown by orange color, and this is the urethra. ओके, तो ब्लैडर के बिल्कुल बाहर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो यूरेथ्रा में ओपन होती हैं, तो ये भी एक स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करते हैं, विच मेक्स द 20 to 30% ऑफ द सीमन. जो मेल जो है जो सीमन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस सीमन का 20 से 30% पार्ट जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स. तो जो इसकी स्क्रीशन है वो उसकी जो नेचर है वो क्या आती है, अल्कलाइन होती है, तो बेसिक होता है. और सेकेंडली इसका फंक्शन क्या है स्क्रीशन का, इट हेल्प्स in the movement of sperms. So we can say it is very essential for the motility of the sperms. इसके बिना स्पर्म्स जो है वो यूट्रस में या आगे विजाइना में जब वो डिस्पर्स होते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वहाँ पे वो अच्छे से मूव कर पाएँ. तो वो सारी चीज़ के लिए जो कौन जिम्मेदार होता है, जो एक स्क्रीशन है जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड की स्क्रीशन स्पर्म की मूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये सीमन का 20 से 30% पार्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है इसमें वो क्या है, सीमेन.
So semen क्या है? It is a viscous fluid which is ejaculated by the male during the sexual intercourse. It is slightly alkaline, as we discussed earlier, that the basic character of the semen is due to secretion of the prostate gland. It contains fructose, calcium, and many other enzymes. During the ejaculation, 3 to 4 ml of the semen is ejaculated or produced, and it contains about 200 to 300 million sperms. जब भी एजैकुलेशन होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेल जो है वो 3 से 4 ml जो सीमन प्रोड्यूस करता है, उस सीमन में 200 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं. ओके, इन ह्यूमन बॉडी फ्रक्टोज इज ओनली फाउंड इन सीमेन. Okay, which is very important thing. The fructose is only found in semen and is therefore used as a evidence in the case of rape. मैनी केसेस में जो है रेप के केसेस हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि ये ह्यूमन सीमन है, क्योंकि सिर्फ फ्रक्टोज जो है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द सीमन. ओके, तो दीज आर द जस्ट वी कैन से ओवरव्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमने सिर्फ जो है बाहर से एक इसकी पिक्चर समझनी है. तो इसके नोट्स पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा. सेकेंडली यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स. तो इसमें डायग्राम्स में आपने कौन कौन से आपने इंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है. सेकेंडली आपने ड्रॉ करना है लेटरल व्यू. देन उसके बाद आपने ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, देन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. ओके, so this is all for today. So very simple टॉपिक. तो जस्ट आपने इसको याद रखना है चीज़ों को. तो इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है. तो एक इसके साथ मैं एक एडिशनल वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें 3 डिमेंशनल जो है इसकी मॉडलिंग आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसकी लोकेशन क्या है, ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो ठीक है बच्चे, थैंक यू. ओके.